So what I told, generally in real life work, we do not predict first the dependent variable. We collect data of both independent as well as dependent. Okay. Now suppose that we are having this data, income and expenditure. Okay. And I am taking Y as dependent and X as independent. Now I calculated some things. This is called third column. What we are doing in third column, it is called deviation. Deviation from mean, okay, of X. So I calculated deviation from mean of X, deviation from mean of Y. Also, square is also. So if I, so what is this one? What is this one? Variance. It is variance. Okay? And why we go for that one? What was the need to squaring it? The problem was that we were interested in deviation, but when we take mean of deviation, it always becomes 0. Because the positive deviation and negative deviation sums to 0. So it fails to provide idea of distance, how the observations are varying. Then people adopted two policies. One was, the basic funda was to delete this negative sign. So two techniques were adopted. One was squaring the deviation and another was absolute deviation. Okay? So in absolute deviation, we just sum these values ignoring the sign. And then we calculate mean, and it is called mean deviation or absolute deviation. And there is no need of under root at that place. Why? When we add, it will be in original unit, but it is in square unit. So why, when we adopted this second policy, a square root of this was taken to bring it in original unit. Similarly for Y, and in this way we can calculate so many things. We can calculate covariance by the help of which column? Last column. The mean of this column is covariance. Okay? Mean of this column is variance of Y. Mean of this column is variance of X. So, on the basis of these four values, on the basis of these four covariance, standard deviation of X and Y, we can calculate beta naught and beta 1. Okay? And then we can write our model. Beta naught is equals, A is beta naught here. Beta naught is equals to 9.13 and beta 1 is 0.58. Once it is obtained, it is called simple regression equation. Now, this is our
model, proposed model. For which variable? For which variable? Y. By which variable? X. So it is model for variable y. Now we will see how good is my model. Okay? How good is my model? So, this was my x. Okay? Now I calculate the value of y for these x by our model. And I am already having y value from my experiment. जैसे हमने आपको दिखाया था डेथ वाला कि one was from model and another was from experiment. Similarly, by this model we can calculate value of y. This one. This one was the original value from experiment. And this is the value of y by this model as this one. Okay? If my model is correct for the real y, then here should be 14. Here should be, here should be, here 25. It means my model is not 100% accurate. My model has some error. How much? This is God. These fluctuations are being made by God. Okay? Now we calculate certain things, and those are sum of square. There is a word sum of square. सुना है? SS. नहीं सुना? बहुत लोगों के चेहरे पे नहीं आ रहा है कुछ. Okay. This value is called SS of x. ठीक है? This value is called SS of y. So, for any variable, you can calculate its sum of square. Okay? And sum of square tells information available in data. Sum of square tells information available in data. For example, एक डेटा लिखिए 10, 10, 10, 10, 10. 5 बार 10 लिख दीजिए. What is SS? अरे हाँ. How SS is calculated? Data minus mean and then square and then sum. It means there is no information in data. Okay? Clear? Now, the information in any data
may be due to the effect of some others. Information in any data may be due to effect of some others. अब आप जो जा करके अब थीसिस लिखोगे या पेपर, the information in that writing will have some effect of this workshop. ओके अब कोई कहे कि आपकी राइटिंग में इस वर्कशॉप का इफेक्ट कितना है, बताओ. वी कैन कैलकुलेट इट. ओके, so sum of square is the information available in data, and this information may be from different sources. This information may be from different sources. Okay, now sorry, so this was my data. This was my data. Why? The information available in this data is by the effect of so many sources, and out of those sources, one source is income. Okay? Clear? Now, this data is data of what? Which variable? वेरिएबल का कोई नाम है ना, नाम बोलिए. नो नो नो, लिटरल वर्ड, एक्सपेंडिचर. दिस डेटा इज डेटा ऑफ एक्सपेंडिचर. दिस डेटा इज डेटा ऑफ, दिस डेटा इज डेटा ऑफ, this data is data of expenditure only and only by the effect of X, income. ठीक है? And this data is data of expenditure by the effect of all those factors except. अब डेटा को तोड़ दिया हमने दो भाग में, एक बाय प्रेडिक्टर और एक बाय अदर प्रेडिक्टर्स. ठीक है, अब हमारी इंफॉर्मेशन कितने वेरिएबल में बट गई? दो वेरिएबल में. ओके, अब अगर हम इसका एसएस निकालें, इसका एसएस और इसका एसएस दोनों को ऐड कर दें तो इसके एसएस के बराबर हो जाएगा. बस रिग्रेशन एनालिसिस यही करता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में हाउ मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल बाय विच प्रेडिक्टर. अगर आप ऐसा जान जाओ तो इन फ्यूचर यू गेट द वैल्यू ऑफ दोज प्रेडिक्टर्स and calculate the future value of dependent variable for prediction purpose. So the same is here calculated. SSY, if you add, this is the original y, sum of square, this is the sum of square of by x, and this is by residual. If you add these two, it will be here. हम लोग ये कभी कैलकुलेट करेंगे. Now, how we present these analysis? It is presented by the help of a table, and it is called ANOVA table. Okay? ANOVA table. So, we put these three values in the tabular form.
Number one, source of variation. What was the region of variation in the value of dependent variable? So one was x, that was regression, that is called regression, and then it is called residual. We write sum of square calculated here. We write average of these values. So we divide this by degree of freedom, and then we calculate another value f. This is test formula, and then we say that whether it is significant or not. Okay, so we do all these things in hands-on. And then we calculate r square. The r square is just the division of this sum of square to the total sum of square, and it is 69%. Okay, now you open your Excel file. कुछ लाइंस को हम इसकी हाइड कर रहे हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर लें, जैसे कल किया गया था. यू हाइड सम रोज. Okay, the question. Since the same syllabus was for each student, same teacher was teaching to each, same age group was there of the students, same question paper was given to each. Why? Marks of each student is not same. ठीक है? Answer. Since there are so many variables which affect the marks except these क्या कहते हैं आप लोग उसको, एडजस्टेड वेरिएबल्स, सबके समान हैं. हाँ, सेम टीचर, सेम पेपर, ये सब एडजस्टेड हैं. Hence, the marks are varying. Okay, next question. How much variations ब्रैकेट में information available in marks. आप और क्लियर करना चाहो, समेशन y माइनस y बार क्या का स्क्वायर.
हाउ, ठीक है, क्या लिखा आपने शुरू में? वेरिएशंस इन मार्क्स इज ड्यू टू अटेंडेंस परसेंट, ठीक है। वेरी, अटेंडेंस से वेरी हो सकता है क्योंकि सबके अटेंडेंस सेम नहीं है। ओके, नंबर नेक्स्ट, हाउ मच वेरिएशन इज ड्यू टू their study hours at home. Next, how much variation is due to their gender? लड़कियां ज्यादा नंबर पाती हैं, लड़के कम पाते हैं। ओके, what is total variation of these three predictors? Okay, next, is it same as the variation of marks? Okay, up answer up first पे। To get the answer up first, आप लिखिए, लिखना चाहें तो, या मैं बोल जाऊं? बोल जाए ना? To get the answer up first, we first see what is the relationship between marks and attendance, whether it is linear type or non-linear type. By scatter diagram. ओके, तो ये बनाया हुआ है शायद, आपका स्कैटर डायग्राम बना हुआ है। We see that the relation of marks with attendance seems to be, अभी आप परफेक्ट नहीं बोलते हैं, हमेशा कुछ seems, likely शब्द लगाएंगे। seems to be linear. Okay, let it is marks equal to beta naught plus beta 1 into क्या? अटेंडेंस प्लस रैंडम। ठीक है, जो भी घाटा होगा कौन पूरा कर लेगा? रैंडम। ठीक है, द बीटा नॉट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट of regression line, and it tells the average value of y when x is 0। ठीक है, y x समझ रहे हैं ना? Beta 1 is called slope of regression line, and it
tells amount of increase or decrease. हेलो, हाँ हाँ, अरे बेटा सॉरी, मैं भेजना भूल गया था। आज मैं एक जगह लेक्चर में हूँ, आज नहीं ले पाऊंगा 1 बजे से। हाँ हाँ, मैं बताना भूल गया था। Amount of increase or decrease in value of हेलो, हाँ हाँ नमस्ते, हाँ एक क्लास में हूँ, लेक्चर में। हाँ, खाली होके बात करते हैं आपसे। Amount of increase or decrease in value of y by unit amount of increase in value of x. If beta is positive, sorry, beta 1 is positive, a increase will be treated, beta 1 negative, a decrease will be treated. ठीक है? So, in our problem, if we calculate slope and क्या क्या चीज हमें कैलकुलेट करना होगा, बीटा नॉट एंड, सो राइट हियर बीटा नॉट and beta 1. It is for our memory. Now here equal to, okay, and beta naught is what? Intercept. So INTER, you will get the word intercept. Double click it. It will ask two things, known y, known x. Y means dependent. आपको डिपेंडेंट ही अब देना है, किसी को कभी भी नहीं देंगे. Okay, so I clicked in marks first and dragged up to last, and then put comma, and again click in this. This is known part, and bracket closed. So if a student do not comes in class, how much marks is expected for him? 29 marks. Okay? Beta 1 equals to slope again similar way, marks comma attendance, bracket closed. Okay, what it says, if
Ram's attendance is 60%. If Ram's attendance is 60% and Shyam's attendance is 61%, then the Shyam's marks will be 0.58 more than Ram's. ठीक है? It is called rate of change. So our model is yeah. I think I told earlier. As if x is 0 means attendance is. If x is 0 means attendance is 0, means a student do not attends the class and he appears in examination. It is expected that he will get how much marks? 29 marks. Okay? अब आगे चाहो तो आप नोट लिख लो. In many problems, there is no clear-cut explanation. Like this problem for the intercept. But due to mathematical reasons, it is incorporated in model. अब मान लो कि हीमोग्लोबिन और एज, हीमोग्लोबिन से एज अफेक्ट होता है क्या? नहीं ना, हीमोग्लोबिन तो जन्म से वही रहता होगा. तो बीपी एंड एज, ठीक है? सो बीपी इज डिपेंडेंट, एज इज इंडिपेंडेंट. अब आप कहोगे कि एज 0 होने पे बीपी इतना होगा, वो कभी 0 नहीं आएगा मॉडल से, बट वहां इंटरसेप्ट निकलेगा. ओके, सो मेनी सिचुएशन वी कांट एक्सप्लेन intercept, but it is necessary for preparing the model. So model is now 29.95 plus 0.58 into x or attendance. Okay? Can anyone calculate information available in marks? आप लोगों में से कोई कैलकुलेट करके बताएंगे हमको? Information available in marks. SS of marks. क्या करना है? फट से एक लाइन इंसर्ट करिए. Insert equals to in bracket marks minus what? Mean is here. डॉलर लगेगा. Bracket close. Power how much? 2. And enter, and then drag it
एंड देन फाइंड सम. ठीक है, क्या कर लेना है? सम. तो यहां सिग्मा को यूज कर लिया, सम आ गया. सो एस एस वाई हाउ मच? 6 6 2 3. So how much information is in marks? 6 6 2 3. Okay? क्या हुआ? दिक्कत हो रही है? Actually, why I'm doing like this? Once you learn this, then you can understand the output easily from the SPSS. What is the problem? I forgot to put the dollar. Forgot. Put a dollar sign. Okay. Cell name and letter row number between the cell alphabet. Yeah. You can put both way. Before the name of alphabet and after the alphabet. So it will be logged for dragging below and right side. First question क्या था भाई? What was the first question? So अभी तक हमने क्या निकाला? Total variation. This 6623 is total information of Y. Now we want variation of attendance. Okay? Means out of this, in this amount of 6623, what is the amount of X? Okay? What is the first question? How much variation is due to attendance percentage? How much is Variation is due to the attendance in marks is due to. okay? So this is the variation 6623. It is due to marks or all regions. It is due to only marks or so many regions. Many reasons. So many regions. And you have to answer that particular, that is by the effect of marks. So you have to get the data. Okay? Of what? Marks by effect of attendance. So आगे लिख लो चाहे तो. Let us calculate marks by effect of attendance. Marks by attendance. Okay? See this one. This X is what? Attendance. If I put here 56.97, I will get a number. Okay? This number will represent what? Marks. And marks by attendance. If I put here 29.31, I will get a number, and this number will be marks
by the effect of attendance. So we can calculate the data of marks by the effect of attendance. Okay? So let us calculate. Equal to, every time I have to replicate these two. So we will put dollar sign with these cells. Beta naught plus beta 1 multiplied by attendance. I will put dollar. And डॉलर. इसका थोड़ा मैं बोल्ड करता हूं, साइज इंसर्ट कर लूं तो आपको दिख रहा है फार्मूला कि नहीं? मैंने क्या लिखा? बीटा नॉट की वैल्यू यहां है, मैंने इस सेल को क्लिक कर दिया. ओके, प्लस, देन प्लस साइन, then I clicked here because it is beta 1, then I typed the star button for multiplication, and then I clicked the first value cell, it will be calculated. But when I drag it below, this cell will skip. So at the right of typing, I will put dollar. Okay. Clear हो गया? So can we calculate the information available? Okay, let us drag all. Okay? Can we calculate the information available in this data also? Yes? And this will be called the information of y due to x. And but certainly this information will be less than 6623. This information will be less than 6623. Okay? So let us calculate. हमको करना क्या होगा? इसका मीन निकालना होगा, then minus, then square, and then add. Okay? So here is the formula for mean. I just copied it. I pasted here. Control V. Yes. It will be always same. It will be always same. The mean of both will be always same, but the information available in both will be different. Okay. Now let us calculate sum of square for each one. Okay. So just copy from here. Copy this formula, because in this formula what we are doing, this value minus this value. If I copy this one and paste here, so it will take this and this. Okay, so हमारा काम हो जाएगा. I just copied it and pasted here. Now see the formula. हमने टाइप वगैरह कुछ नहीं किया.
and then I drag. So this is SS by किससे? X. SS of y by x. एंड इसका सम निकाल लो आप. 4185. मैं यहां इसे लिख लेता हूं. SS y by x equals to this value. Okay. So, how much variation of marks is available in which? Next question is, how much variation of marks is available in किससे? X, attendance. How much variation of marks is available in X? In other words, इसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं, how much variation of y is being explained by? How much variation of y is being explained by predictor? Okay? Equal to SSY of predictor upon SSY. SSY of predictor, आप देख रहे हो कि नहीं? SSY of predictor 4184 divided by SSY. SSY means 66. आगे लिख लीजिए. It is also called R square. It is also called R square. आगे और बढ़ा दीजिए. It is also called model fit situation. अब सोच लीजिए, अगर ये 1 के बराबर आ जाए, it means your predictor is 100% changing. किसको? मार्क्स को, डिपेंडेंट को. तो कभी भी ये रियल लाइफ में 1 मिलेगा? नो. A model is good if it has, a model is good in comparison to other model. A model is good in comparison to other model if it has larger R square in comparison to other. हाँ, capital R square. Okay, ठीक है. The R square of our present model is, the R square of our present model is
equals to this oblique this. 63%. 63% means the 63% variability in the values of variable y is due to attendance. The next step is to know हाँ जब एक लेक्चर में है खाली होकर करें जल्दी कोई ठीक ठीक है ओके ठीक है नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नो द सिग्निफिकेंस वैल्यू आर और whether the model is significant. मॉडल तो निकल गया, मॉडल का आर स्क्वायर तो निकल गया, अब प्रश्न है कि हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट है कि नहीं. फॉर दिस पर्पज वी मेक ए नल हाइपोथेसिस. We make a null hypothesis with assumption that beta 1 is equals to 0, means predictor is not related with dependent variable. ठीक है. To test it we use t-test okay and f-test for r square, treating it as r square is 0. तो हम इसमें दो टेस्ट करते हैं. एक तो हुआ कि आर स्क्वायर का टेस्ट एफ टेस्ट से करेंगे और बीटा का टेस्ट टी टेस्ट से. अगर आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट आ गया तो बीटा पक्का सिग्निफिकेंट आएगा. ठीक है. अगर बीटा सिग्निफिकेंट आ गया तो आर स्क्वायर भी सिग्निफिकेंट आएगा. दिस इज फॉर द सिंपल रिग्रेशन, क्योंकि एक ही प्रेडिक्टर है. ठीक है. कई प्रेडिक्टर होंगे तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है. ओके. फॉर द एफ टेस्ट we prepare a table called ANOVA table. ठीक है. Which has following columns. Number 1, source of variation. ठीक है. तो हम लोगों ने किसको सोर्स ऑफ वेरिएशन माना अपने इस स्टडी में?
मार्क्स के वेरिएशन का सोर्स किसको लिया? अटेंडेंस को। और सोर्स को पता किस तरह से किया? रिग्रेशन से। ठीक है, किससे पता किया? तो इसको लोग, या तो आप अटेंडेंस लिखो, जनरली जो सॉफ्टवेयर से लिखते हैं वह है रिग्रेशन, ड्यू टू रिग्रेशन। आप अटेंडेंस भी लिख सकते हैं, या एक्स भी लिख सकते हैं। और दूसरा भी कोई सोर्स है कि नहीं? दूसरा भी कोई सोर्स है कि नहीं? हाँ, दूसरे सोर्स भगवान है। ठीक है, दूसरे सोर्स रैंडम, या रेजिडुअल, या एरर। अब हम लोगों ने यक्स के सोर्स से तो डेटा पा लिया, किसका डेटा पा लिया? वाई का। लेकिन वी आर स्टिल नॉट हैविंग द डेटा ऑफ वाई बाय द सोर्स ऑफ नॉट एक्स, बाय द सोर्स ऑफ नॉट एक्स. So if I subtract here marks by not x, तो पता कर सकते हैं कि नहीं? In this marks the role of x is available and the role of not x is also available. And from our regression analysis, we have obtained this one as marks by role of attendance. So if we subtract this one from this one, then again we will get not x. It is called free from effect of x. कल जो हमने आपको पार्शियल की आइडिया जब बता रहा था मैं, ठीक है? So let us calculate equals to 57 minus this. ओके, एसएस में से नहीं, मार्क्स में से प्रेडिक्टेड को माइनस करेंगे. 57 माइनस मार्क्स बाय एक्स. No, 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 no. This is my marks, na? Marks by x. I have taken something else. Oh, sorry. G. Okay. It will also have क्या? सम ऑफ स्क्वायर. इस मार्क्स में भी इस डेटा में भी इंफॉर्मेशन होगा. ठीक है, होगा कि नहीं होगा? इसका भी एस एस वाई निकालेंगे. कितना आएगा? आएगा दिस माइनस दिस, अगर आप निकालोगे तो.
ठीक है, निकाला जाए कि मान लेंगे आप? हाँ, ओके. नाउ वी आर हैविंग 3 y's, one our original y and 2 y's by bifurcation. Which y is free from effect of x? Which y is free from effect of x? Last one. And which y is only by the effect of x? The second one. ठीक है? Now, the sum of square. So, the first is regression source and second is random source. And then total. Then we write degree of freedom. How it is defined? Sum of square. Value of SS. Sum of square. So what is the sum of square of regression? It is 4, 1. So equal to, I clicked in this cell, it will type. Okay. What is total? I click here, equal to, and I clicked here, it will type. And for this one, as we discussed, this minus this. Okay? क्या चीज? रिपीट करने के लिए कह रहे हो? इसका लिखने का? पहले ये देखो, इसकी वैल्यू कहां पे है? सम ऑफ स्क्वायर, इसका सम ऑफ स्क्वायर ये है ना? हाँ, तो मैंने टाइप नहीं किया, मैंने यहां लिखा इक्वल टू और इस सेल को क्लिक कर दिया, वो टाइप कर दिया. ठीक है? इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर रखी है यहां पे, तो फिर मैंने टाइप नहीं किया, इक्वल टू लिखा, सेल को क्लिक कर दिया, वो टाइप करेगा. जब भी हम इसमें चेंज करेंगे वहां ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. और इसका हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया था, इसलिए कि हमें पता है कि इनका सम इसके इक्वल होगा, इसलिए हमने इसको निकालने के लिए कहा दिस माइनस दिस. आ गया? ओके. The next column is DF, degree of freedom. So, for total, it is n minus 1. किसके लिए? Total के लिए. n minus 1. So, what was the n? 50. So, it is 49. Okay, this is degree of freedom of sum of square. ठीक है? And next are two, regression and residual. For regression, how many parameters were in regression? Our regression, how many parameters were? 2. One was beta 0, another was beta 1. So the degree of freedom of regression is number of parameter minus 1. ठीक है? So it will be a 1. So it will be 48. Okay? Now mean. Mean SS.
mean SS. Mean SS means SS upon corresponding DF. Mean SS means SS upon corresponding DF. Equals to, for regression, it is SS upon DF, or 1, equals to SS upon DF. Okay? Then F value. F value, F is equals to mean SS regression, mean SS regression upon mean SS residual. So equal to this upon this. इसकी वैल्यू छोटी आ रही है कि बड़ी? हाँ, पक्का है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट पी वैल्यू. We use, चाहे तो आप लिख लीजिए, we use F probability distribution, F probability distribution to get p-value of p-value for calculated F value. In Excel, we use equal to F dist ब्रैकेट, मुझे जहां तक याद है मैं बोल रहा हूं, अभी हम लोग देखेंगे क्या मांग रहा है. F dist ब्रैकेट x कामा df1 कामा df2 ब्रैकेट क्लोज. कुछ और है? बस ना. कुमुलेटिव भी है. एफ डिस्ट में है कि एफ डिस्ट डॉट कुछ में है? हाँ, कुमुलेटिव. कुमुलेटिव को एस कर दीजिएगा. df1 means df of regression, df2 means df of residual. Is equals to F dist हमारे में तो एक बस यही पूछ रहा है, x df1 df2. ठीक है. आपका और एडवांस वाला वो होगा MS ऑफिस. हाँ, डॉट वाले तब में देख लीजिए आप. df1 is 1, so I clicked here, it will read. df2 48, I clicked here, it will read. और हमने क्या बोला था कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी?
रिजेक्ट होगी, इट मीन्स इसकी वैल्यू 5% से छोटी आने वाली है। आप दूसरा वाला यूज करो, एक है ना एफ डॉट डिस्ट है शायद, हाँ सर हमारे में एफ डॉट डिस्ट ही है, बाकी नहीं है, तो आप कुमुलेटिव एस करो फिर। नहीं आ रहा ना वो, मैंने हटा के देखा, आप देखो होगा होगा आया ना मैम? ये देखो ना एरर दे रहा है, ये नहीं फंक्शन इज एरर नहीं देगा ठीक है, इट इज 10 to the power -12, अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके, नहीं आपने दूसरा वाला यूज कर लिया होगा कमांड, एफ डिस्ट। एफ डिस्ट है कि डॉट डिस्ट? एफ डिस्ट यूज करो, डॉट वाला यूज कर रहे होगे लग रहा है। साइंटिफिक नोटेशन तुम्हारा उसमें 0 आ रहा होगा ना, हाँ तो वो नेचुरल नंबर में है नोटेशन। साइंटिफिक में चेंज करोगे तो आएगा, फॉर्मेट सेल में जाके साइंटिफिक चेंज कर दोगे तो इस तरह से आएगा। सेल में जाके राइट क्लिक से फॉर्मेट सेल। ओके, we find that our model is significant। ठीक है, the hypothesis test of regression coefficient can be also made similarly, but we do it by SPSS। अब हम लोग SPSS में चलते हैं, अब हम आपको समझाएंगे नहीं, अब सारी चीजें आएंगी और आप उसे अब एक आइडिया ग्रैप्स कर लिए हैं तो समझेंगे। अब हम लोग इसी फाइल की SPSS फाइल ओपन करेंगे। SPSS कहीं और है क्या? I remember semester 1. I remember semester 1 sir. अच्छा, हुआ था तो इसी तरह से बना के रखे थे एक्सेल में मेरा गूगल शीट पे। सर में एग्जाम में सर चेंज करके दिए 2-3 वैल्यूज, बिठाए हो गया खुद। इसमें डेटा ये वाला शायद कल हमने एक एक्सेल फाइल बनाई थी ना, उसमें है ना जीपीएस में। Spaces slides. Day 3. Sir, सर एक्सेल पे खुला हुआ है ना? वो फाइल खुली है कि दूसरी खुली है? वही खुली है। तो इसमें तो बहुत कूड़ा कबाड़ा न्यू डाटा में चले गए हैं। अच्छा, ये वाला तो नहीं लगेगा, इतना तक तो लगेगा। डिलीट कर देंगे। बकिया कहाँ गया?
पूरा नहीं किए थे, मैं रुक नहीं गया। सर वो वहाँ से हाइड किया सर यहाँ से उसको कहते मार्क्स को ही कॉपी करके वहाँ वाला मार्क्स वाला नहीं नहीं, पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ था ना। यही ना, यस सर। एक हटाना पड़ेगा पहले। बस सर वही इसको डिलीट कर दीजिए सर, बाकी सर सेव कर लीजिए सर। सर इसको बंद करना पड़ेगा। हो जाता है खुल वैसे। जाएगा खुल जाएगा। सर एक्सेल को बंद कीजिए सर। कभी कभी प्रॉब्लम करता है सर। उसका उसके कॉम्पिटेबिलिटी की वजह से। सर इसलिए सर 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 इसको चेंज कीजिए। शीट 1 होगा सर। ओके, आपने ले लिया एसपीएसएस में अपनी फाइल, या कल का तो रखा रहा होगा ना? तो अब आते हैं एनालाइज। जितना भी हम लोगों ने अपना ब्रेन वॉश किया इतने देर तक, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एनालाइज, रिग्रेशन, एनालाइज, रिग्रेशन एंड लीनियर। ओके, राहत मिला आपको ना? किसको डिपेंडेंट में रखेंगे? ट्रांसफरेट, इंडिपेंडेंट। अभी तक मेरा ओके एक्टिवेट नहीं है, हमें नहीं आता है एसपीएसएस, आई डोंट नो एसपीएसएस, सो बट आई वाज नोइंग दैट इंडिपेंडेंट इज दिस वन. Okay activated, let's go ahead. Don't think what is the meaning of these two all buttons. Okay, now okay, result came. So now see R square, how much it is? 63%. And what was it by Excel? Same. Okay, and what it is saying? It is saying that 63% of the variation in the marks of student is due to what? Attendance. Okay, next question is whether, अभी कई चीजें हैं जो हमने एक्सेल में आपको नहीं दिखा पाई. How this came? Okay, how this value comes? हाँ, हम नहीं दिखा पाए हैं. Anyway, अब हम डिस्कस कर देंगे केवल. ANOVA table. Now match your ANOVA table from this one. Whether it is same? Same. And what is the conclusion from here? This model summary is significant. Means my model is statistically significant. Okay? Now, go down. What is my regression model? Beta naught plus beta 1 attendance. Now see, coefficient means the values of beta. Okay,
Now, constant means intercept. So beta naught is equals to 29.95 and beta 1 is equals to 0.582. So you can write your regression model. Ky is equals to, marks is equals to 29.95 plus 0.058 x1, x. Okay? Now the question is, whether these beta values are significant or not. And I told you, if this is significant, then either of these will be significant surely. Okay? Here is the significant value by t-test. This is t value. Okay? So your slope and intercept both are significant, statistically significant. So it is matter of writing in the literature. That's all. Kaam khatam. Okay? What was your next question? Your first question was, how much variation of marks was due to attendance? 63%. Okay? What was the second question? How much variation of marks was due to? तो अब क्या करोगे आप? फिर एक रिग्रेशन मॉडल बनाओगे? ओके? इस मॉडल में क्या लोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टडी आवर्स, बस काम खत्म. Analyze, descriptive, regression, linear. Now remove it from here and bring it here. And that okay. So answer of question number 2. ठीक है? अगर आप चाहो तो लिखो. 53% of the variations of marks being explained by क्या? Study hours. And it is significant. And it is significant, bracket में, F is equals to 54.22, okay, comma, df1 equals to 1, df2 is equals to 48. जब आप ये पेपर में लिखते हो, then reviewers understand, you have some idea. So why I'm saying like this. df2 is equals to 48, p is equals to 48. df2 is the residual degree of freedom. Okay? And p value equals to लेस, अब चूंकि यहां हम इक्वल टू लिख नहीं सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0.05. Okay? Yes. Sir, in this model, what is the random error? Yeah, I'm saying. Initially, when I show you the concept, what I said, deterministic part plus a random part. In random part, I took mean as distribution as normal and mean as 0, but the variation was sigma square. The variation in the random. Okay, this variation estimate is ये आपका random
standard error of this, what is written there? Standard error of estimate. Standard error of estimate. Whatever estimate we provide, मेरी बात समझ रहे हो आप? फिर से मैं बता रहा हूं, सुन लो आप. एक सर्कल बनाओ ऐसे, गोला, उसमें 5 वैल्यू आप लिखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. इसका मीन कितना है? 3. गोले के बाहर लिख दो, मीन इज इक्वल्स टू 5, सॉरी 3. अब ये सोचो कि हम, ये पॉपुलेशन है और इसमें से सैंपल निकाल करके मीन बताना चाहते हैं. ठीक है, तो अब आप इसमें से सैंपल निकालो. कितने का तय कर लो, 1 का कि 2 का कि 3 का? 2. इस गोले से 2 नंबर बाहर निकालो, कोई 2 नंबर अपने मन से. ठीक है, एक मीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सैंपल मीन. ठीक, जरूरी है कि वो 5 आए, सॉरी 3 आए? नहीं आया. ओके, दिस इज एस्टिमेट. दिस इज व्हाट? दिस इज एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन. ओके, बट इट इज नॉट 100% एक्यूरेट. क्यों? क्योंकि हर आदमी के एस्टिमेट अलग अलग आ रहे हैं. किसी का 3 आ रहा होगा, किसी का 2.5 आ रहा होगा. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज एरर इन एस्टिमेट? हर आदमी सैंपलिंग कर रहा है, उस 5 में से हर आदमी 2 निकाल रहा है, every student. So every student is having different sample mean, means different estimate of population mean. So there will be error in estimate. How much error is there in estimate is called standard error of estimate. Okay? ठीक है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं by the rules of probability distribution, by following using certain probability distributions. तो वही जो वहां दे रहा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट. इफ दिस एरर इज वेरी लेस, if this error is very small, it means my estimate is closer to actual. It means this error estimates is a reliability check of our analysis. It should be small. ठीक है, so it should be also mentioned. The R square is this, with error estimate this one. Sir, what is the error estimate from this coefficient table? Uh, There are 2 standard errors, sir. One is written in the line of constant and one is written in the line of attendance percent. So what is the standard error? in the line of, In the coefficient table, okay. Every estimate, now see, first idea हमने दिया मीन के एरर का. Okay, now everyone is doing another exercise. They are calculating geometric mean instead of arithmetic mean. So another estimate will occur for the geometric mean. It will also vary from person to person. So geometric mean will also have its standard error. Okay. Now here what we are calculating? We are calculating 2 things: R square and beta coefficient. So beta coefficient is different from R square. So there is a standard error of R square. There is a standard error of beta coefficient. Okay. So why it is different? The standard error of beta coefficient tells about the estimate of beta. And the standard error of this one, the previous one, standard error of estimate, it tells about error of R square. so sir, in the final equation, that y is equal to beta naught plus beta 1 x plus random error, na? Mm-hmm. The full equation. Yeah. So what will Generally, when we write the equation, we do not incorporate random part in the equation. Once it is, the values are obtained. Okay.
because the totality, the expected value of error is taken as 0. Okay. So, sir, while writing the results in the text, we should mention what is the standard error of constant. Surely, and surely. standard error of Yeah, error. yeah. That will be more accurate writing. And probably if standard error of estimate यहीं से निकल जाता है, कहीं से, इन्हीं वैल्यूज से, किसी को याद है? मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमें याद नहीं आ रहा है, ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटेड वैल्यू इसी इनोवा टेबल से निकल जाती है. सो शुड वी मूव फर्दर? हाँ, क्या लिखा था आपने? कुछ लिखा ना, छोड़ दिया था फिर हम लोगों ने. एरर ऑफ एस्टीमेट इज, तो जब हम इसको कहेंगे तो हम आर स्क्वायर के लिए कह रहे हैं, ठीक है, मॉडल के लिए. मॉडल स्टैंडर्ड एरर इज this one, and regression coefficient error is given in ANOVA table. What is standard coefficient beta? Yeah, I am coming on that one. अभी वेट करिए. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर लिख लिया कि नहीं? लिख लिया ना. अब आगे बढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट? ओके, तो उसका भी पता कर लीजिए. अब तो हमें बताना नहीं पड़ेगा ना. 42.7. ओके, लिख लीजिए. द वेरिएशन ऑफ मार्क्स ड्यू टू जेंडर. तो क्या करोगे आप? एक रिग्रेशन चलाओगे, उसमें इंडिपेंडेंट किसको ले लिया? जेंडर. अब बताइए, आपने y को जानने के लिए कितने मॉडल बनाए? 3. ठीक है, हो गया. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है, वो मजेदार क्वेश्चन है. हाँ, व्हाट इज Total variation of all three predictors. यह? तो क्या करेंगे आप? तीनों वेरिएशन जोड़ दीजिए. देखिए क्या हो रहा है. इट इज मोर देन 100. इट मीन्स दिस मॉडलिंग प्रोसीजर इज नॉट गुड. Okay? It means the predictors are associated with each other. It means the predictors are associated with each other. Hence, the separate simple regression is not a valid way. The separate simple regression is not a valid way when we have different क्या? Predictors. Okay? Now we see, अब आप सारे प्रेडिक्टर्स को एक साथ लेंगे, ठीक है. लेकिन इसके लिए हमने अपने पीपीटी में बोला था कि यू हैव टू चेक द स्कैटर डायग्राम ऑफ ईच प्रेडिक्टर विथ डिपेंडेंट वेरिएबल, कि वेदर इट इज लीनियर और नॉट. तो ये आपको करना चाहिए, ठीक. चाहो तो आप एसपीएसएस में देख लो. ग्राफ, लीजेसी डायलॉग, स्कैटर, सिंपल, डिफाइन, वाई एक्सिस, विच वन? मार्क्स, एक्स एक्सिस, अटेंडेंस तो हम लोग देख चुके हैं. ओके, स्टडी आवर्स. Okay? Just okay?
अब देखिए इसका जो चलने का ट्रेंड है, लीनियर लग रहा है क्या आपको? हाँ, नहीं। अब अगर आप, इफ यू आर यूजिंग अ लीनियर मॉडल फॉर प्रेडिक्शन ऑफ दिस, इट इज नॉट वेरी आइडियल सिचुएशन. Because the scatter diagram is going like this. Exponential growth type. If x is increasing, y is increasing slowly, and for further increase, it is increasing fastly. ठीक है? तो ये उचित तो नहीं है, बट लेट अस, सिंस वी आर इन द लर्निंग स्टेज, hence treat it as linear. The third one is gender. So go for another graph, legacy dialog, scatter dot, and define, and now transfer it and bring gender. One thing should be taken in care. When you are taking a qualitative variable, okay, so code it as 0, 1. And if there are so many codes, then you bifurcate the in different ways, जैसे हमने मॉर्निंग में बताया आपको कास्ट के लिए. Now, whether it is linear or not, I think it is perfectly linear. मैंने बताया क्या था कि अगर आप इनके डॉट्स के बीच से एक लाइन ड्रॉ करो इस तरह से कि वो लाइन इन डॉट्स को इस तरह से डिवाइड कर दे कि अपर साइड और लोअर साइड्स के डॉट्स की संख्या मोर और लेस क्या मिल जाए? इक्वल आ जाए. सो इफ आई ड्रॉ ए डॉट लाइन लाइक दिस, इट मे बी ट्रीटेड एज, ठीक है? ओके. नाउ if that line is parallel to this one, correlation coefficient will be 0, means no relationship. My lines is like this, it means there will be weak correlation between marks and, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो. ओके, तो इसके बाद हम चलेंगे. अब आप लिखो. Now let us assume that attendance study hours and gender are linearly related with marks, and consider following regression model. Marks in bracket y equals to beta naught plus beta 1 attendance in bracket x1 plus beta 2 in bracket x2. x3 को अभी छोड़ दो.
It is a multiple regression model. And here our aim is to know how x1 and x2 are jointly, in bracket, linearly affecting y. In other words, what is the percentage of variation of y being explained by? x1 and x2 jointly. अभी x3 को डाला ही नहीं है मॉडल में. x1 and x2 jointly. Okay? So we do another regression analysis. Analyze regression, linear, and attendance. Okay? And okay. हाँ, एक चीज और, जब when we make the ANOVA table of this model, what will be the degree of freedom of regression? 2, because there are 3 parameters now. Okay? And what will be the degree of freedom of residual now? 47. And the total degree of freedom will be again 49 because observations are 50. So now R square is 0.70. अब पहले आपने जब दोनों को अलग अलग मॉडल में रखा था तो दोनों का आर स्क्वायर मिल करके ज्यादा हो जा रहा था 100%. ठीक है, अब आगे चाहो तो अब लिख लो. The R square value of this model is 0.7, which is square of correlation coefficient between marks and marks by effect of attendance and study hour both. मेरी बात आप समझ रहे हो क्या? आपको एक, अब फिर से आप जब एनालिसिस करोगे अपने इस रिग्रेशन इक्वेशन से तो आपको कितने मार्क्स के डेटा मिलेंगे? 2, एक बाई रिग्रेशन और एक बाई रेजिडुअल. जो बाई रिग्रेशन डेटा मिलेगा वो बाई इफेक्ट ऑफ किससे मिलेगा? अटेंडेंस एंड स्टडी आवर्स. ठीक है,
Now take the value of this column and the value of y column and calculate the correlation. This is called multiple correlation. आगे आप चाहो तो लिख लो. It is multiple correlation. आप चाहेंगे तो अभी आपको दिखा दिया जाएगा इससे. ठीक है, कुछ कह रहे हो? The model standard error is 6.49. Model is significant, statistically significant. फिर आप वो सारी बातों लिखोगे, f is equal to this one, df like that. Okay? The regression model, the proposed regression model is 25.24 plus 4.45 x1. x1 means अटेंडेंस था ना? हाँ, x1 हम लोगों ने स्टडी, तो आप 0.048 x1 लिखोगे. 0.048 x1 plus 4.45 x2. वो थोड़ा सा हम लोगों ने उल्टा डाल दिया ना, उसमें क्रम से नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे जो डिफाइन किए हो ना अपने मॉडल में, .408 प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया हो. ठीक है. It says that if a student gets attendance 1% more than other, he will get 0.41 more marks, 0.41 more marks, while the study time of both are same. It is also written in literature like, it is also written in literature like 0.4 marks more, keeping study hour neutral / adjusted. So it is adjusted effect of attendance. Similarly, it also says that if a student reads 1 hour more than other, अगर ये मिनट में होगा तो हम बोलेंगे 1 minute,
अगर डेज में होगा तो 1 days, लाइक दैट, वो डिपेंड करता है यूनिट पे. 1 hour more than other, he will get 4.45 marks more. मोर इसलिए कह रहा हूं कि इसकी साइन क्या है? प्लस है. कीपिंग और एडजस्टिंग द अटेंडेंस, मतलब कि दोनों के अटेंडेंस क्या हो? सेम हो, तब ये बात कही जा रही है. सिंपल में हम लोग ये बात नहीं कर पा रहे थे एडजस्टेड का, ठीक है, इसलिए यह बेटर एनालिसिस होगा उससे. Our model parameters are significant. अब आपकी इच्छा हो तो आप सबका टी वैल्यू लिखिए, सबका पी वैल्यू लिखिए, और नहीं तो एक लाइन में बोल दीजिए. ठीक है, पैरामीटर्स आर सिग्निफिकेंट. अब जरा सा एक तीसरा मॉडल, y इज इक्वल्स टू क्या? बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1. x1 मीन्स कोई वेरिएबल अटेंडेंस, प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3. अब आप देखो, जब हमने सिंपल किया था तो आर स्क्वायर कम था. जब हमने मल्टीपल किया, 2 प्रेडिक्टर लिया, तो आर स्क्वायर क्या हुआ है? बढ़ गया है. ठीक है, अब एक और बढ़ा दिया, देखा जाए आर स्क्वायर बढ़ता है कि कम. कम तो होने का सवाल ही नहीं है. कहां तक चल गया? 0.84, सॉरी 0.71. ओके, पॉइंट पहले से बढ़ गया क्या? थोड़ा बहुत बढ़ा. अब आगे लिखिए. द प्रॉब्लम विथ आर स्क्वायर इज दैट, द प्रॉब्लम विथ आर स्क्वायर इज दैट जबकि जेंडर देखिए सिग्निफिकेंट इफेक्ट कर रहा है क्या? हाँ, नहीं कर रहा है. ठीक है, तो जेंडर के डालने से हमें फायदा कुछ तो हुआ नहीं, तो आर स्क्वायर बढ़ कैसे गया? पहले वाले में तो आपने 3 रखा था प्रेडिक्टर, 2 प्रेडिक्टर. The previous model there was 2 predictor and it was having some model fit value r square. Now I introduce third variable gender, okay, and which is not significant. But r square is again going up. The variable is not affecting, then how it will be a better model? Okay? So why we are saying the problem with r square is that it automatically increases as the number of predictors in model are increased. Though the predictors may not be significant. To get rid of this problem, another tool is used for model fitting. Which neutralize the number of predictors in model.
and it is called adjusted R square. So, it's better way to mention कुछ ज्यादा ही आप लोग लिख लिए 2 दिन में। नहीं तो हमारी दुकान तो 10 मिनट की थी ना, हम चलते कैसे इतने घंटे? अरे तो हम तो क्लिक करना था SPSS, रिग्रेशन ये हो गया। तो फिर आशीष ने 2 दिन दे रखा था, तो हमने कहा कि भाई मदारी की तरह से काम करो कि पब्लिक जो है जुटी रहे। It's better to use adjusted R square in place of R square. ठीक है? The next question asked by this fellow. इन्होंने पूछा था, कहाँ से हो भाई आप? जोधपुर। मेडिकल कॉलेज से? एम्स से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of the variable predictors, attendance and study hours, which predictor is affecting more to the marks? क्या है आपका जवाब? इस मॉडल को छोड़ के ऊपर वाले में जाइए, जिसमें कि यही दोनों हैं केवल। जो इसके पहले मल्टीपल, ये भी मल्टीपल रिग्रेशन है, बट कम हियर। हाँ, जिसमें 2 प्रेडिक्टर रखा था। हाँ, which one is affecting more to the marks? Study hours. Attendance percentage more significant. More significant नहीं, both are significant, but which one is affecting more? मार्क्स किससे ज्यादा बदल रहा है, अटेंडेंस से कि पढ़ाई के घंटे से? Study hours से। स्टडी आवर्स से। ओके, बट हु इज सेइंग स्टडी आवर, ही मे नॉट बी करेक्ट। तो अब आप फिर से कहानी लिखो, फिर से आप कहानी लिखिए। द कोफिशिएंट, बीटा कोफिशिएंट provides the rate of change. पता नहीं, लिखो तो फिर बताते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर का कहा कि जैसे फर्स्ट मॉडल था, हाँ, एक वेरिएबल ऐड करने पे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ गई। सर एडजस्टेड आर स्क्वायर भी तो बढ़ा है, बहुत माइन्यूट बढ़ा होगा उसके कंपैरिजन में। 0.1 बढ़ा है, और दूसरे में अभी और बढ़ाओगे ना तो एडजस्टेड आर स्क्वायर वही रह जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये आर स्क्वायर भागता जाएगा। The beta coefficient of study hours, says there will be 4.45 marks increase. There will be 4.4 marks increase if
we increase study hour by 1 hour. ठीक है? The beta coefficient of attendance says there will be increase of 0.41 marks if attendance is increased by 1%. Bracket में. Can we compare both? Can we compare both? Huh? Because one is in percent and another is in hours. Okay? The answer is no. Okay? If we want comparison, then we have to reduce the unit of measurements for dependent as well as predictors. डिपेंडेंट को नहीं भी हटाएंगे तो भी चल जाएगा. और हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट हटाने का तरीका कोई बताया आपको? स्टैंडर्डाइज द वेरिएबल. ओके, अब नेक्स्ट लेट अस डू द सेम एनालिसिस. Let us do the same analysis by standardized data. लंच हो गया है, छोड़ रहे हैं. By standardized data. तो कल हमने जब एक्सेल में आपको स्टैंडर्डाइज बताया था तो थोड़ा बहुत मेहनत किए थे हम लोग. मीन निकालो, माइनस करो, डॉलर लगाओ, एसडी से भाग दो, ड्रैग करो, लाइक दैट है. कुछ नहीं करना है. Analyze descriptive statistics. Descriptive में शायद है, yes. In descriptive box there is a box. Save standardized value as variables. आपको जिस जिस वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना है आप उन वेरिएबल को इधर ट्रांसफर कर दो और इसे आप टिक कर दो तो आपका नया डेटा आपके डेटा फाइल में बन जाएगा. दैट वाज ओके. सो मार्क्स, अटेंडेंस, स्टडी आवर्स एंड टिकट एंड क्लिक ओके. अब आप अपनी डेटा फाइल देखो. जेड मार्क्स, जेड अटेंडेंस एंड अगर आप इसका मीन और एसडी मांगोगे, मीन विल कम 0 एंड एसडी विल कम 1. ओके, certainly. Now you take Z marks as dependent and remaining 2 as independent. So, analyze and then regression and then linear. And reset all previous. Okay? Now, which variable we bring? Z marks. And remaining 2 as independent. Okay? And then click OK.
Again, you will get same f value in ANOVA table, which was the previous one. But the sum of square may vary due to the changes. And now see beta coefficient. There will be, constant will be 0. See, it's 10 to the power minus 15. And this is the beta coefficient. It is now independent of percent as well as hours. Now you can compare which one is more. Which one is affecting more? Attendance. And now see, this value is same as, this value is same as, so SPSS was doing it previously, which you asked. See here. Standardized beta coefficient. It was already converting in the standard form, and it was reporting you to the parameter value for the comparison purpose. Okay? So you can do from that one.